welcome everyone. Today I will be taking sexual reproduction in flowering plants. तो फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए? मेल एंड फीमेल gametes. So before explaining sexual reproduction, first you should know the structure of a flower. Sexual reproduction in flowering plant, जो कि क्लास 12th में सेकेंड चैप्टर है. So structure of flower. What is flower? Flower is a compressed shoot. Flower क्या है? Flower एक compressed shoot है. Flower के अंदर 4 orals होते हैं. 4 orals means calyx, corolla. 4 orals are present in a flower. Calyx, second corolla, third androecium, fourth gynoecium. ये कैलिक्स और कोरोला ये आउटर वाले होते हैं. दिस टू आउटर टू सेट्स, दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला, इनको कहते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स, एक्सेसरी पार्ट्स. एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दीज आर नोन एज एसेंशियल पार्ट्स. कैलिक्स और कोरोला को एक्सेसरी बोला जाता है और एंड्रोशियम और गाइनोशियम को एसेंशियल पार्ट्स बोला जाता है. नाउ देयर इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर. कंप्लीट मीन्स जब ये चारों ओरल्स प्रेजेंट होंगे, व्हेन ऑल द 4 ओरल्स आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज कंप्लीट. इनकम्प्लीट मीन्स इफ एनी वन is absent, then it is known as incomplete. Now same here, second word is unisexual or bisexual. Unisexual and bisexual. Unisexual means if any one reproductive organ, either androecium or gynoecium is present. If stamen is present, stamen is the androecium part. अगर stamen present रहता है तो उसको कहते हैं staminate flower. उसको क्या कहते हैं? staminate flower. staminate. और अगर सिर्फ pistil, जो कि gynoecium part है, अगर सिर्फ pistil present है तो उसको कहते हैं pistillate. So staminate and pistillate. Staminate means अगर stamen present रहता है, that is androecium part, if it is present, then the flower is known as a staminate. If pistil is present, which is a gynoecium part, then it is known as pistillate. This is known as unisexual. दोनों में से एक होगा, या androecium होगा या gynoecium होगा. Bisexual के अंदर क्या होता है? दोनों, both the reproductive organs are present, then it is known as bisexual. Bisexual flower. Same here, monoecious and dioecious. Monoecious. What do you mean by monoecious? Monoecious means when the staminate and the pistillate flower are present on the same plant, then it is known as monoecious. And if staminate and pistillate flowers are present on the different plant, then it is known as dioecious. So this is monoecious and dioecious. Now come to the flower part. Structure of flower. First we'll see the stalk part. This is the stalk part. This is also known as pedicle. So this is stalk. Next, just above the stalk, you can see here the swollen part, which is known as thalamus. Now, thalamus, it holds all the 4 orals, that is calyx, corolla, androecium, gynoecium. इन सब को बांधे रखता है. So it is a swollen part and it holds all the orals. Now here, this green part, it is known as sepal, or you can say calyx. This green part, this is sepal. What it does, it protects the inner orals. Next, this part, this is known as corolla or petal. So what is the function of this petal? You can see this petal is colored part of a flower. That means it attracts insects for pollination. ये pollination के लिए insects को attract करता है क्योंकि ये colorful होता है.
So corolla, it attracts insects for pollination. Next, come to the androecium part. The upper part, it is known as anther. The upper swollen part is known as anther, and the lower part, it is known as filament. Both anther and filament is known as stamen, which is the androecium part. So anther is the swollen part and filament is the long part. Now, what is the function of anther? Anther, it produces pollen grains. Anther, if you see, anther, they are attached to the filament in different methods. अलग-अलग तरीके से fixation of filament to anther are different. सबके अंदर अलग-अलग होता है. जिसके अंदर बेस से अटैच रहता है उसको कहते हैं बेसिफिक्स्ड. जिसके अंदर पीछे से अटैच रहता है उसको कहते हैं डॉर्सिफिक्स्ड. और जिसके अंदर स्पाइडर लिली की तरह हल्के से अटैच रहता है उसको कहते हैं वर्सेटाइल. तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 तरह के हैं, बेसिफिक्स, डॉर्सिफिक्स, वर्सेटाइल. वर्सेटाइल, आई एम मेकिंग हियर सो दैट इट विल बी मोर क्लियर. वर्सेटाइल, इफ यू सी, यू मस्ट हैव सीन स्पाइडर लिली. स्पाइडर लिली के अंदर क्या होता है कि पीछे से तो अटैच होता है लेकिन इतना लूज अरेंज अटैच होता है कि अगर आप थोड़ा ज्यादा हिलाएंगे तो नीचे गिर जाता है. ठीक है. सो दीज आर अटैच सो दैट दे कैन स्विंग फ्रीली. ये आराम से ताकि फ्रीली स्विंग कर सके. सो इस तरीके से अटैच रहता है. दिस इज नोन एज वर्सेटाइल. द फिक्सेशन ऑफ फिलामेंट टू एंथर इन डिफरेंट नेम्स आर गिवन. बेसिफिक्स, डॉर्सिफिक्स एंड वर्सेटाइल. और अगर एंथर, दिस आर अगेन सिंगल लोब्ड एंड बाइलोब्ड. अगर सिंगल लोब्ड है, सिंगल लोब्ड anther, that is, this is like single lobed. In China rose you will find this is anther and this is filament. This is single lobed. Single lobed means एक lobe. That is known as monothecous. Monothecous. अगर आप बाइलोब्ड देखेंगे, बाइलोब्ड के अंदर इस तरीके से होता है. इट इज कनेक्टेड बाय कनेक्टिव. बाइलोब अगर देखेंगे, दिस इज नोन एज डाइथिकस. सो मोनोथिकस एंड डाइथिकस. मोनोथिकस सिंगल लोब्ड होता है और जो बाइलोब्ड होते हैं वो उसे कहते हैं डाइथिकस. अब जब उसका टीएस काटते हैं तो हम देखते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है. If you see the section cutting of this, you will find this kind of structure. Here, what are these? These are pollen grains. These are pollen grains. These are pollen sacs. Pollen sacs. And this is anther lobe. Now, if you see the single lobe, you will find only this part will be there. This part means 2 pollen sacs. सिंगल लोब के अंदर 2 पोलन सैक होंगे और दोनों पोलन सैक दे आर डिफरेंशिएटेड बाय अ ग्रुप. और बाइलोब के अंदर कितने पोलन सैक होंगे? 4. 1 2 3 4 पोलन सैक्स होंगे. क्योंकि 2 एंथर लोब हैं तो 2 एंथर लोब के अंदर 4 पोलन सैक होंगे और एक एंथर लोब के अंदर 2 पोलन सैक्स होंगे. और ये पोलन सैक्स जो हैं वो ग्रुप से डिफरेंशिएट रहता है. और इनसाइड द पोलन सैक्स पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लोब्स, दैट इज मोनोथिकस एंड dithecus. So we have done androecium part, anther and filament, how filaments are attached to the anther. So name is given, basifix, dorsifix, and versatile. And then what is the function of filament? Filament, it holds the anther, and anther, it produces pollen grains. This is all about the androecium part. Next is gynoecium part. The upper part, it is known as stigma. Long tube-like structure that is known as style, and rounded structure is known as ovary.
and inside the ovary you will find ovule. Okay. Now this stigma, style and ovary, this is known as pistil, which is the gynoecium part. Gynoecium means female, androecium means male. Now you can see here, the stigma, it produces sticky substance. Sticky substance produce होता है and it holds the pollen grains. आपने देखा होगा रेनी सीजन में चाइना रोज के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे चिपके रहते हैं, येलो येलो कलर के. ठीक है. सो द पोलन ग्रेन्स स्टिक ऑन द स्टिग्मा पार्ट एंड दिस पोलन ग्रेन्स देन प्रोड्यूसेस व्हाट? पोलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस करेगा? पोलन ट्यूब. तो ये क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब. और पोलन ट्यूब स्टाइल के अंदर से कहां जाएगा? कहां जाएगा? ओवरी के अंदर. ओवरी के अंदर क्या है? फीमेल गैमेट. तो मेल किसके अंदर है? पोलन ट्यूब के अंदर. पोलन ग्रेन्स आर मेल. पोलन ग्रेन्स स्टिक on the stigma part and then it produces pollen tube, and the male gametes, these are present in the pollen tube, और then it goes through this style part. style के अंदर से जाएगा और जाके कहां जाएगा? ओवरी के अंदर. और ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेगा. Ovary is a swollen part. Here in ovary, you can see number of ovules are present. So the arrangement of ovules are also different. So that is known as placentation. The arrangement of ovules in the ovary is known as placentation. अगर आप चाइना रोज देखते हैं तो चाइना रोज के अंदर इस तरह का प्लेसेंटेशन रहता है. That is known as axile placentation. Axile placentation means number of ovules in each locule. That is known as axile placentation. So the arrangement of ovules in the ovary known as axile placentation. Known as placentation. ठीक है. अब प्लेसेंटेशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एक्साइल होगा, मार्जिनल होगा. मार्जिनल अगर आप पी देखेंगे तो पी में इस तरीके का प्लेसेंटेशन होता है. दैट इज मार्जिनल. मार्जिनल मीन्स मार्जिन में अटैच रहते हैं. नाउ स्टिग्मा ऑल्सो, इफ यू सी द स्ट्रक्चर, स्टिग्मा के अंदर भी अलग अलग तरह के होते हैं. किसी के अंदर बाइफिड स्टिग्मा होता है, किसी के अंदर पेंटाफिड स्टिग्मा होता है, कैपिटेट स्टिग्मा होता है. जैसे हम चाइना रोज अगर देखेंगे उसके अंदर कैपिटेट स्टिग्मा होता है. कैपिटेट स्टिग्मा मीन्स कैप लाइक स्ट्रक्चर. सो ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी एंड ओव्यूल. इसके अंदर ये जो चीज है इसको प्लेसेंटा कहते हैं. ये जो प्लेसेंटा है बाय विच द ओव्यूल्स आर अटैच्ड, दिस इज नोन एज प्लेसेंटा, and these are ovules. Now this is all about flower. Now come to the we have done the staminal tube also. That anther, how they are attached we will do just now. Now see, this is the flower. You all know this is hibiscus or China rose. You can see this China rose. Now this part is known as pedicle or stalk. Here you can compare. आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं. This is the stalk part. Now here the swollen part, it is known as thalamus. Okay. Here in China rose we have seen there is another part that is known as epicalyx. आप देख सकते हैं यहाँ पे epicalyx है. epicalyx यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इस तरह का स्ट्रक्चर है epicalyx. So here they are not attached to each other. So these are known as sepals. These are not attached to each other. When they are free, it is known as polysepalous. This is known as polysepalous because they are all free. अगर जुड़ा हुआ होता तो गैमोसेपैलस होता. क्योंकि ये फ्री है इसलिए ये क्या हो गया? Polysepalous. And you see the estivation. Estivation means the arrangement of sepals or petals. Estivation means the arrangement of sepals or petals. उसको कहते हैं estivation. Estivation भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. इसके अंदर आप देखिए सब अलग अलग हैं. तो इस तरह के estivation को कहते हैं valvate estivation. Valvate estivation.
इस तरह के एस्टिवेशन को कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन. नाउ नेक्स्ट, if you remove this, now see the calyx part. Calyx part, if you remove this calyx part, you can see here this part. This is the calyx part. One more should be there. China rose, one more calyx. 5 calyx are there. So this is the calyx part. You can see here. This is the calyx part. You can see they are united. ये सब के सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. तो क्या कहेंगे? गैमोसिपेलस. ये कैसा है? ये पूरा इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है. तो इसको क्या कहेंगे? गैमोसिपेलस. और एस्टिवेशन वही है, कोई ओवरलैप नहीं है, इसलिए इसको एस्टिवेशन को भी हम वेलवेट एस्टिवेशन कहेंगे. वेलवेट एस्टिवेशन एंड गैमोसिपेलस. गैमो मतलब जुड़े हुए हैं सब. दिस इज सेपल. नाउ यू कम टू द corolla part. Corolla part you can see here. These are twisted. एक दूसरे से alternately present है. एक दो, एक के अंदर ऐसे फंसा हुआ है, एक के अंदर एक. ठीक है. So these are like this. 1 2 3 4 5 ऐसे मुड़े हुए हैं. So this kind of estivation is known as twisted estivation. आप देख सकते हैं यहाँ twisted है. ये देखिए ट्विस्टेड एस्टिवेशन है. इसके अंदर एक के अंदर एक है, ये है, फिर इसके अंदर ये है, फिर इसके अंदर ये है, फिर इसके अंदर ये है. ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन है. अगर मैं इसको रिमूव करती हूं, कैन सी हियर, इफ आई रिमूव फ्रॉम हियर, you can see this removed part. See this part, if you see, this is the, you can see here, this part is attached to the androecium part. This is what? This is staminal tube. This is staminal tube and these are all anthers and filament. ये एंथर है जो पीले पीले वाले दिख रहे हैं येलो कलर के. These are all anthers and these are attached to the staminal tube in the with the filament. So there is again, when the stamens are attached and they formed one staminal tube, only single staminal tube. ये देखिए आप, ये इसके साथ attached है. It is more clearly visible like this. Now see, the petals are attached to the androecium part. Petals are attached to the androecium part. When petals are attached to the androecium part, it is known as epipetalous. It is known as epipetalous. It is attached. This is very clear. It is attached. Attached means epipetalous. Now come to the androecium part. Androecium part, you can see here number of stamens, and all these stamens, they are united and form a single staminal tube. It is known as monoadelphous. Mona means single staminal tube. Single means these are single staminal tube. ये क्या बना रहा है? एक single staminal tube बना रहा है. So it is monoadelphous. कुछ फ्लावर्स के अंदर डायएडल्फस भी होता है. डायएडल्फस मीन्स जब दो स्टेमिनल ट्यूब बनेंगे. जैसे आप स्वीट पी देख लेंगे, स्वीट पी के अंदर डायएडल्फस है. स्वीट पी के अंदर डायएडल्फस है. सो दिस इज डायएडल्फस मीन्स इट फॉर्म्स अ टू स्टेमिनल ट्यूब. मोनाइडल्फस चाइना रोज के अंदर है, हाइबिस्कस के अंदर है. दैट इज व्हाट? मोनाइडल्फस फॉर्मिंग अ सिंगल स्टेमिनल ट्यूब. दिस इज अ सिंगल स्टेमिनल ट्यूब. और हमने देखा कि इस स्टेमिनल ट्यूब के अंदर से हमने क्या निकाला था? गाइनोशियम पार्ट. दिस इज द एंड्रोशियम पार्ट. स्टेमिनल ट्यूब, देन एंथर, देन फिलामेंट. This is androecium part, which is the male reproductive part. Now if you see the gynoecium part, again I am showing you how to take out the gynoecium part.
Gynoecium part, what else is there? Stigma, style and ovary. Now this gynoecium part, it was present inside the, you can see here, it is present inside the staminal tube. I think it is visible, children. This white colored part is the style part. This is the style part and it is present inside the staminal tube. You can see here, it is coming out from the staminal tube. Now see, it has come out. Now this is the gynoecium part. This the gynoecium part means, you can see here the gynoecium part. This swollen part is known as ovary. White colored swollen part जो दिख रहा है इसको ovary बोलते हैं. और ये जो white लंबा line जा रहा है, this part, this is style. And here you can see 5 stigma है. तो I have already told you that this cap-like structure, this is capitate stigma. This is a cap-like structure known as capitate stigma, then the style and then the ovary. Ovary, if you cut it, you will find the arrangement of ovules in the ovary, that is known as placentation. There are different types of placentation, marginal placentation, axile placentation. Placentation सब अलग अलग होते हैं. Now, ये जो स्टिग्मा है इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाएंगे और ये पोलन ग्रेन्स फिर क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब. और पोलन ट्यूब इस स्टाइल के अंदर से जाएगा. अंदर से जाके कहाँ जाएगा? इस ओवरी के अंदर. इस ओवरी के अंदर जाएगा और ओवरी के अंदर जाके फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेगा. सो दिस इज द स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. दीज आर द गाइनोशियम पार्ट. ठीक है, इसको पिस्टिल भी बोलते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज. पिस्टिल और गाइनोशियम एक ही चीज है. ठीक है. सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. Clear now? I think now flower is very clear. Once again, if I take flower, these are we have done. This is the calyx part. This we have done. This is calyx. This is calyx part. Then these are the corolla. Corolla is attached with the androecium. Androecium, that means it is known as epipetalus. Androecium, there are number of stamens. Stamens means anther and filament, and they unite together and form a single staminal tube, that is known as monoidelphus. Then come to the gynoecium part. Gynoecium part we have done that. This is the gynoecium part, stigma, style and ovary. Inside this style, pollen tube enters and it goes to the ovary part, and there it fertilizes with the female gamete. This is all about the structure of a flower. Now I think it is very clear to you. In my next video, I will take structure of anther. So please subscribe my channel. Thank you, children.